नमस्कार। आज के हमारे टॉपिक्स हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस of solids in liquids, and the final topic is the Raoult's law for non-volatile solids. Let's discuss these one by one. Vapor pressure of liquid solution. As we know, a liquid is the constituent of solute and solvent. Solvent is generally volatile, that converts in vapors, but the solute may or may not be volatile. That is depends on nature of solute. We discuss the properties of only binary solution, that is the solution containing two components, the solution of liquids in liquid, and the second one is the solid in liquid. The first is the liquids in liquid and second is solids in liquid. Let's start. Vapor pressure of liquid solution. Now look on this example. We have the two components in this solution, component 1 and component 2. component 1 को हम लोगों ने रेड बबल से शो किया है, component 2 को ब्लैक बबल से शो किया हुआ है। जब हम किसी सॉल्यूशन को एक सर्टेन टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स गैस पार्टिकल में चेंज होते हैं ड्यू टू वेपोराइजेशन। आफ्टर सम टाइम गैस पार्टिकल जो है वो फिर से लिक्विड पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे ड्यू टू कंडेंसेशन। एक स्टेज हमारे पास ऐसी आएगी, ऑन दैट टाइम द रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। द रेट ऑफ वेपोराइजेशन is equals to the rate of condensation. That stage is known as state of equilibrium. उस स्टेट में क्या होता है कि जो हमारी वेपर्स हैं जो प्रेशर डालती हैं लिक्विड की सरफेस पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब यहाँ देखो दो टाइप के हमारे पास में कंपोनेंट है 1 और 2। दोनों के कंपोनेंट की जो वेपर्स हैं वो लिक्विड फेज के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। लेट हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि जो प्रेशर डाल रही हैं वो प्रेशर हमारे पास कितना है इन दोनों का, P टोटल। द टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द P टोटल, प्रेशर एक्सेप्ट बाय वन कंपोनेंट प्लस प्रेशर एक्सेप्ट बाय सेकंड। A quantitative relationship between vapor pressure and mole fraction is known as the Raoult's law. That is known as a Raoult's law for a volatile solute mean जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है वो। For a volatile solute, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. This is known as Raoult's law for volatile solutes. Let's in the same way we have the two component 1 and component 2. इन प्योर स्टेट उनका वेपर प्रेशर हम लोगों ने कितना मान लिया है, P01, दूसरे का कितना है P02। जब हमने उनका सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन स्टेट में उनका पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने कितना माना है, P1 एंड P2। इनका मोल फ्रैक्शन कितना है, Chi1 एंड Chi2। So for the component 1, according to the Raoult's law, the partial pressure is directly proportional to mole fraction. ये प्रोपोर्शनल साइन को जब हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो इक्वल्स टू साइन आएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कौन होगा, P01। P01 is known as the vapor pressure of component 1 in pure state. For the same way, for the component 2, P2 is directly proportional to Chi2 or P2 is equals to P02 into Chi2. So according to the Dalton's law of the partial pressure, P total is equals to P1 plus P2. There are the two vapor phase are present, P1 and P2. So the total pressure is P1 plus P2. So when we put this number, the Chi1 P01 plus Chi2 P02
or as we know that chi1 plus chi2 is equals to 1, so chi1 is equals to 1 minus chi2। तो हम लोगों ने क्या किया, x1 का जो वैल्यू था ये हम लोगों ने उसकी जगह क्या कर दिया 1 माइनस x2 प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन, बिकॉज द मोल फ्रैक्शन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन in a solution is always 1, so 1 minus chi2 into p naught 1 plus x2 p naught 2। ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसमें से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या होगा, देखो इस साइड में x2 है, एक साइड में क्या है x2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, सो रिमेनिंग इक्वेशन इज द p naught 1 प्लस ब्रैकेट क्लोज p naught 2 माइनस p naught 1 into x2, this is the P total or total vapor pressure। The total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any component। जैसे हम लोगों ने यहाँ रिलेट किया किसके साथ, x2 के साथ, हम लोग चाहें तो इसको x1 के साथ में भी रिलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो x2 का वैल्यू है, x2 की वैल्यू को हमें डिस्प्लेस कर देना। किससे करेंगे, x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस I1 by this। Let me plot a graph between the vapor pressure P1 and P2 and mole fraction of two components I1 and I2। In this graph we are considering that our component 2 is more volatile compared to component 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने क्या माना है, हमारा जो कंपोनेंट 2 है वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है कंपेयर टू कंपोनेंट 1। जो जितना जल्दी वेपोराइज होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। नाउ लुक इन दिस ग्राफ, द वेपर प्रेशर ऑफ P2 इज द हायर कंपेयर टू द P naught 1। On this point, look, this point is indicating the pure component of 1, this point is indicating if we have only the pure component of 2। So on this point the vapor pressure is only due to the component 1, that's value is the P naught 1। On this point the vapor pressure is only due to the component 2 and the vapor pressure due to that is P naught 2। If we have solution in that component 1 and component 2 are present in any ratio, on that time a general equation is given by this one, that the P total is equals to P1 plus P2। The composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the components। जैसे कि हम लोगों ने माना है कि सॉल्यूशन स्टेट में जो हमारे पास कंपोनेंट प्रेजेंट है उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, x1 एंड x2। ऐसा है गैस स्टेट में हम लोगों को उनका अगर कंपोजिशन फाइंड आउट करना है तो गैस स्टेट में मान लिया हमने उनका कंपोजिशन कितना है y1 एंड y2, these are the mole fraction in gas state and the partial pressure of those is P1 and P2। So according to the equation partial pressure is equals to mole fraction into total pressure, so P1 is equals to y1 into P total। Same way we have the P2 is equals to y2 P total। By this method we can find out the composition in vapor phase also। Let me understand this with an numerical। हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड A है, लिक्विड B है, उनका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना है, एक का है 450, दूसरे का है 700 mm of Hg। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर का हमें कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना है 600 mm ऑफ Hg। इक्वेशन से ऑल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज। लेट वी सॉल्व इट। वी हैव द टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट A and component B। Vapor pressure of component is 450, component B is 700 in pure state। Let the vapor pressure in a solution is PA and B is the PB and the mole fraction is chi A and this one is the chi B। So we apply here Raoult's law for volatile solute। Total pressure is given in numerical, that is the 600 mm of Hg।
According to the Raoult's law, PT, total pressure, is equals to partial pressure of A and partial pressure of B. So P naught A into chi A plus P naught B into chi B. ATP means according to problem, the total pressure is 600, that is equals to 450 chi A plus 700 chi B. As we know, XA plus XB is equals to 1. So XA is equals to 1 minus XB. We apply this equation in this one. We displace XA with 1 minus XB. And we further solve this numerical like this way. In that, we got the value of the XB is 0.6. Then the value of the XA is 1 minus 0.6, that is equals to 0.4. Now question again says find out in the vapor phase. In the vapor phase, the composition is this. First we find out the partial pressure of component A and B. The partial pressure of component A by this Raoult's equation, PA is equals to P naught A into XA. As we know, the P naught A for the A is 450. XA mean mole fraction of the A is 0.4. So amount is 180 mm of Hg. Same way we find out the partial pressure of the B, that is the 420 mm of Hg. So in the mole fraction in the vapor state, PA is equals to YA into P total. The value of the PA we already calculated, 180 is equals to YA into P total is 600. By this the YA is 0.30. Same way we calculate the YB, that is the 0.70. These are the value in the gas state. This composition in the gas state and this composition is in a liquid state. Understand this one? Now the Raoult's law as a special case of Henry's law. As we know, according to the Raoult's law, the partial pressure is equals to mole fraction into vapor pressure in pure state. According to the Henry law, the partial pressure is equals to Kh into mole fraction. Both the equations are similar. They are differ only in the meaning of Kh and P naught. So we can say that the Henry law is a special case of a Raoult's law. Vapor pressure of solutions of solid in liquids. Liquids at a given temperature vaporize, and under equilibrium condition the pressure exerted by the vapors of the liquid or the liquid phase is called vapor pressure. Vapor pressure हम लोग किसको बोलते हैं? एक certain temperature पर लिक्विड वेपराइज होकर के वेपर्स में चेंज हो जाएगा. आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा बिटवीन गैस फेज एंड लिक्विड फेज. जब इस इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा उस टाइम पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं अपने लिक्विड के पार्टिकल्स पर जो प्रेशर डालते हैं, दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर. In a pure liquid, the entire surface is occupied by the molecules of liquid. In a pure liquid, if there is no impurities present, surface पे सिर्फ किसके molecules होंगे? Only the molecules of liquid. अगर हम लोग उसमें कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो उस समय क्या होगा? हमारे जो सॉल्यूशन बनेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू प्योर. लेट वी अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. लुक इन दिस वन. वी हैव ए प्योर सॉल्वेंट. दिस वन, इन द प्योर सॉल्वेंट वी हैव द पार्टिकल्स इन द गैस स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली. इफ वी प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, this one, this is the solution. In the solution we prepare 1 mole of the solute and 1 mole of the solvent. So surface के ऊपर हमारे क्या होगा? Equal number of the particles present होंगे. किसके? solute के and solvent के. अगर ऊपर 10 पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो 10 में से 5 solute के पार्टिकल होंगे और 5 पार्टिकल solvent के होंगे. अब solute हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. ओनली द सॉल्वेंट कैन कन्वर्ट इन वेपर फेज. अब ऊपर पार्टिकल कम है
तो कम पार्टिकल होने की वजह से ओनली द फ्यू पार्टिकल्स कैन कन्वर्ट इन वेपर फेज। अब थोड़े से पार्टिकल ही वेपर फेज में चेंज होंगे। जब थोड़े से पार्टिकल ही चेंज हो रहे हैं तो थोड़े से पार्टिकल ही प्रेशर लगाएंगे, थोड़े से पार्टिकल ही प्रेशर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस वन डायग्राम लुक, ओनली द 4 particles are applying pressure. In this example 1 2 3 4 5 6 7 8 particles are applying pressure. So the pressure of the 4 particles is less compared to the pressure of 8 particles. So ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो गया हमारे पास, डिपेंड। अब जो कितना डिक्रीज होगा, वो वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वो किस पर डिपेंड करता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर। उसकी नेचर से उसको कोई लेना देना नहीं है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है। जैसे कि हम लोग 1 मोल शुगर मिलाएंगे, 1 मोल ग्लूकोज एडिशन करेंगे, 1 मोल यूरिया का एडिशन करेंगे, तो जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज होगा वो नियरली सबका सेम होता है, बिकॉज द अमाउंट इज द राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हाउ कैन वी राइट द राउल्ट्स लॉ? फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. How can we mathematically apply it? Look, we have the 2 component, one is the solvent and another one is the solute. जो solvent है उसका हम लोगों ने प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना माना है, P01। solute हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 0। वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, लेट सॉल्वेंट का होगा P1, सॉल्यूट का हमने मान लिया कितना है, P2, लेकिन वो होगा कितना, P2 का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कितना माना है, Chi1, सॉल्यूट का कितना मान लिया हम लोगों ने, Chi2। सो अप्लाइंग राउल्ट्स लॉ, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1 और P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू Chi1। इन द सेम वे P2 is equals to 0 because that is a non-volatile solute. So total pressure is there, Pt is equals to P1 plus P2. The value of the P2 is 0. So we apply here only the value of P1. So Pt is equals to P01 into x1. This is the Raoult's law for non-volatile solutes. A plot between the vapor pressure and the mole fraction of the solvent is a लीनियर, दैट इज लीनियर। एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी किसके बीच में, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वी ऑब्टेन ए लीनियर इक्वेशन। So this is the Raoult's law for non-volatile. Thank you for patiently listening us. Next time we come with a new topic.